Alright guys, there is one more guest on set of Rush with Ruth. She is real, she is genuine, she is a pure soul. She is भूमिका गुरुंग, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत निम्की मुखिया से की 2017 से। निम्की का किरदार उन्होंने निभाया, टीवी ही नहीं, फिल्म, वेब, उन्होंने हर फील्ड में काम किया है। आप सबको बताना चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन के जरिए टीवी इंडस्ट्री की सच्चाई और भी बहुत सारा जानना है अगर आपको उनके बारे में, द रियल भूमिका, हाउ शी इज, तो उसके लिए आप सबको एपिसोड जरूर देखना है। बट बिफोर दैट लेट्स वेलकम भूमिका गुरुंग। This is Bhumika's Pop Talk. So let's know more about her. What is the real Bhumika and who is she in real life? In real life, a pretty simple girl next door, you could say. कुछ ज़्यादा खास नहीं है in short मुझे तो इतना क्या ही कहूँ, but it's just like a very simple girl. I'm just trying to do something extraordinary in life. अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है. Okay. तो yeah, I mean I like a lot of simple things in life, like गिने चुने लोग, ज़्यादा कुछ socializing नहीं, but always with family. Yeah. I like to keep things and relationships especially very simple and very straight. And बहुत मुफट हूँ, कई बार लोगों को पसंद नहीं आती हूँ, मेजॉरिटी टाइम्स लोगों को पसंद नहीं आती हूँ, बिकॉज आई एम प्रीटी ऑनेस्ट ऑन द फेस. सो या ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है. मतलब रियल है, मुंहफट भी है, exactly, कुछ भी बोलना absolutely. है तो मुंह पे ही बोलना है. Yes. सो दिस इज रियल भूमिका. मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जितनी बातें हमने की है, बहुत फूडी है, बहुत खाना पसंद है इन्हें, और उसके चलते कभी पतली नहीं हो पाती है. उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी ये, क्योंकि my whole family is blessed with such good cooks, and I also cook, like, so for me it's like a treat every day at home. तो मैं जब भी सोचती हूँ कि नहीं आज तो मैं वाटर डाइट, मतलब आज से एक हफ्ता वाटर डाइट करूँगी, वो वाटर ही नहीं होता है लेकिन खाना हो जाता है. तो but then I somehow balance it out because I have a wonderful husband who kind of motivates me to get to the gym every day with him, and he trains me. So जो भी थोड़ा बहुत मैं shape में हूँ is all because of my husband, and of course my parents are the ones who've been behind me since my teenage to work on your body. And you need to see my parents, they're super fit. So for me, I think I'm blessed. I'm surrounded with people who keep motivating me, so that helps me to stay in whatever shape I am in today. All right, so let's proceed with the next one. 2017, that was your year, and I'm sure every day is your day only, which we can say because we are the positive souls and we start our day from this statement. Yes. This is my day. So from 2017, that was your serial Nimki Mukhiya, and Nimki, you were playing the main lead. So what's the character behind, or the story which you can relate to this character? I think initially when I started auditioning for it, I didn't understand the role, to be very honest, क्योंकि आपको जब एक स्क्रिप्ट मिलता है आप तुरंत ही समझ सकते हो कि वो राइटर ने कैसे लिखा है. Yes. उसका बैकग्राउंड क्या होगा लड़की का, आपको जीना पड़ता है. जो बोलते हैं ना कि जीना पड़ता है आपको एक वो रोल और एक किरदार जो आपको मिलता है. सो इनिशियली I was taking it very lightly कि this is just another audition. The moment I got the script, I was sitting in the hotel room. I was sharing a room with a friend of mine, and then I read the script and I'm like, तू बिहारी में है. तो मैंने बोला यार ये कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा. I want to do Balaji type of serials, like एकदम माजी and all that. ये वो तभी इतना डेवलपमेंट नहीं था ना दिमाग में, और क्रिएटिविटी क्या होती है and everything. So I just randomly gave the audition. तकिया ऐसे रखा, एक स्पेगेटी पहना था, मैंने एक शॉल लिया, वैसे ही बैठा, मेकअप ऑलरेडी था शूट से, बाल को क्लिप में ऐसे बांधा और मैंने दे दिया. एंड उसमें स्पेसिफिकली था कि थोड़ा बिहारी टोन यूज़ करना. नाउ फॉर मी, अ पर्सन हु इज़ नेवर नोन बिहारी, हु डजंट हैव अ बैकग्राउंड, आई वेंट बैक टू माई चाइल्डहुड वेयर वी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, और हमारे नीचे वाले घर पे देयर वाज अ बिहार से फैमिली थी. पूरा दिन वो आंटी ना अपने बच्चे को बुलाती थी ऐसे ऐसे, माँ क्या है. तो मैंने वो सुना, इतने साल सुना कि मैंने उनका वो मैं चिढ़ाती थी उनका, ऐसे माँ क्या है. तो मैंने वो टोन पकड़ लिया. सो व्हेन आई गॉट दैट स्क्रिप्ट, आई वेंट बैक टू दैट कि अच्छा दिस इज हाउ दे स्पीक. सो आई गेव दैट हल्का सा टोन, एंड आई डोंट नो, जमा सर जो प्रोड्यूसर है शो के एंड द राइटर एज वेल, I don't know, he liked it or he just saw that raw thing in me and everything, and he was actually hooked on to me कि I want to cast this girl only. Okay.
And I very well remember this conversation where I was told that Star was not keen on casting me at that time, but Sir did not give up. He said, no, I want to cast her only, and I will not go with anyone because I want a raw face. They wanted probably a known face at that time. Then मैंने पूरे 1 साल ऑडिशन दिया है. I could not understand the character, as you were saying, कि how you connect. करते 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 I was performing, I was crying also, I was doing everything. तो मेरे लिए मुझे लगा कि वही परफॉर्मेंस है यार, बिना ग्लिसरीन यूज़ किए आंसू निकल रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रही हूँ. तो बट देन एक्चुअली दैट इज़ नॉट परफॉर्मेंस. द स्क्रिप्ट वाज वेरी ह्यूमरस एंड आई वाज डूइंग फोर्स्ड कॉमेडी. तो बाद में व्हेन आई गेव ऑडिशन करके एक दिन फाइनली मेरे सामने आई एंटर द ऑफिस एंड आई सी देयर आर सो मेनी गर्ल्स सिटिंग एंड वन ऑफ आई हैड अ फ्रेंड एज वेल ऑडिशनिंग फॉर माई पार्ट. एंड देन आई एम लाइक, बट आई एम सिलेक्टेड, राइट? सो वर्बली आई वाज on the project, yeah. So I got a shock of my life कि why are they auditioning for my role? मेरा role तो मतलब मैं ही कर रही हूँ ना. So they said no, but you're not performing. तो how can we just go? अभी तक तो हमने contract भी नहीं किया है. That's where it hit me, and I was like, no, I have worked really hard to come till here. Now if I'm getting an opportunity, I cannot just take it for granted कि हो जाएगा, क्या है, acting ही तो करनी है. So everyone knows this fact about me, who have, like, the people who work in the industry, that I'm super bad with auditions. That's one of the reasons I don't crack half of the projects, because I just don't get the feel. मैं auditions में मुझे वो feel ही नहीं आता performance का, तो मैं एक बहुत ही okay performance दे के आती हूँ, which everyone else can do. So I could not put this across to the makers कि यार don't limit it till the auditions, take me to the next level, take me to a mock shoot on the set. Then you see what I can do. Yes. So then they said कि चलो ठीक है, now we'll do a mock shoot with you and set पे करेंगे mock shoot. तो ये लड़के हैं, इनके साथ 3 लड़के थे and Vishal as well was Vishal Singh. He had also auditioned and did a mock shoot for Babbu Singh's role. Okay. तो सबके साथ मैंने mock shoot किया and the first take I remember, the moment I entered the set I was like, this is mine. This show is mine. Yes. Now this is mine because this is my space. Yeah. This is what I'm going to do now. I entered जो मुझसे पिछले 1 साल में नहीं हुआ. That mock shoot did it all, and the moment I got a cut and everything and I came and I asked, okay. Then I think in the end they gave me that smile that you're on board, and he's like कि आज करते हैं शायद sign and everything, and then I signed it. It was a story behind Nimki, which she played in Nimki Mukhya. And the same year you have done The Wedding Anniversary, the movie. And what is the difference between film and TV? So the film thing which I did, The Wedding Anniversary, it was a very short cameo kind of a thing which I did. That was way before Nimki. And Nimki ke baad, I think just recently, a few months ago, I have done a film. And which is going to be released very soon, and it is a very different cinema which you will see, and you will see a different me. You will not even recognize me. And the name is Dev Kali, and we have very good names like Sanjay Mishra sir, Zarina Wahab ma'am, then a lot of them, and Sanjay Manjrekar as well. So इतने अच्छे legendary actors के साथ जब आप काम करते हो, तो you feel nice. Though I never had a scene with them because my role in that film is that all the main villains die, and that's when I enter. It's like a hint to second season of the film. So it's going to be a theatre release. So when you shoot for a film and when you shoot for a television, the treatment is absolutely different, Ruchi, because बहुत सारी चीज़ें, when it's a very controversial topic when it comes TV actors and film actors, because कितना भी बोल लो आप, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे हुए हैं जहाँ पे उनको वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिली, उनको इक्वल ट्रीट किया गया है. बट येस, टेलीविजन एक्टर्स लिटरली हैव टू लीव वर्किंग इन टेलीविजन टू गेट इनटू फिल्म्स एंड वेब. उनको वो गैप देना पड़ता है. देयर आर लॉट ऑफ क्योंकि जब भी आप वेब या किसी चीज़ के लिए ऑडिशन करते हैं, द फर्स्ट थिंग दे आस्क यू इज़ आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या किया है. एंड द मोमेंट यू शो टेलीविजन दे डोंट कंसिडर इट दैट मच. इट्स लाइक कि अरे मतलब इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट, बिकॉज वो उनके लिए वो परफॉर्मेंस वो देख पा रहे हैं, उनके लिए इट्स लाइक ऐसे कौन एक्टिंग करता है. टेलीविजन एक्टिंग इज डिफरेंट, आई एग्री. सो फॉर मी आई थिंक द ओनली थिंग आई थिंक वेयर टेलीविजन इज लैकिंग, टेलीविजन as a medium, as we earlier spoke, it's the biggest medium that
our country or anything, especially our country has, because I don't think so television का इतना reach है किसी और country में जितना हमारा है, हमारे yes. देश में, हमारी आबादी भी उतनी है. So the masses want to see television, and it's like कि अगर 10 actors के film आते हैं, आपकी film release होके कब उतर जाते, people will not come to know, they will not recognize you. But the moment a television actor is walking on a street, they'll say अरे ये तो वो वाली सीरियल की लड़की है. So that's the reach television has. Yes. And I literally am so grateful that I started my career with television, and I'm still majorly doing television. But my only feel जहाँ पे मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ ये सोच के is the environment that television is working in it's completely toxic. Yes. And not good for someone who wants to become an actor, who wants creativity. Why do you think every television actor runs to web and films? Yes. They level up. They level up. Why do they level up? Why is TV not at the same? This thing is because of the people working in television. The treatment is super horrible. They will treat your camera people, they'll treat the makeup artist, they'll treat your spot boy like they're not even human beings. मतलब बात करने की तमीज़ नहीं है. वो मतलब गलती से अगर एक हेयर वाली शॉट में आ गई, वहीं पे गाली पड़ जाती है या चिल्ला देते हैं, तो फॉर मी इट्स लाइक नॉट ह्यूमन ट्रीटमेंट. दिस इज़ नॉट राइट. दो मैंने शुरू में मैं भी खुद व्हेन आई डिड माय फर्स्ट शो आई यूज्ड टू लुक कि अच्छा ऐसे ही काम होता है क्या. बट व्हेन यू ग्रो एज अ पर्सन, not as an actor but as a person, when you grow initially, after few years you realize ki no man, no one deserves that treatment. Yes. Why is no one speaking up? And on my sets, you go back and ask any of my people on set or shoot, you'll be the first person who will, किसी को भी पूछो ना कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो the first person to fight for them will be me. Yes. कि do not treat my people like that. And not just the treatment, they treat actors like robots. कि आपका 12 घंटे का तो है, चलो येस वी हैव साइंड योर कॉन्ट्रैक्ट, येस वी हैव गिवन यू 30 days ब्लॉक, येस वी हैव सेड कि वील वर्क फॉर 12 hours प्लस 1 घंटा तो ऊपर नीचे कहीं भी होता है, येस. बट व्हेन वी आर सिक, अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन डाई ऑन योर सेट. आर यू गोना बी लायबल फॉर इट? You will not come and pay my bills. Obviously. You will not go and say, oh I'm so sorry आंटी जी आपकी बेटी मर गई या बेटा मर गया. आप जाके उनके बच्चे या बेटा के रिप्लेसमेंट नहीं दोगे. आपके लिए क्या है, आपका प्रोडक्शन का आपका टाइम पूरा होना चाहिए, आपके एपिसोड छपने चाहिए, एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एबल टू स्पीक, चाहे वो मरा हुआ हो क्यों ना हो, अगर वो कोमा में भी होगा उससे भी बुलवा लेंगे. सो दिस इज अ ट्रीटमेंट वेयर आई थिंक इट शुड चेंज द वर्किंग आवर्स. मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हूँ, बट if I was, I would have definitely done something for the way television works. The working hours should be not more than 10 hours. You know, human beings need rest. They need to reset. They need to know. They need to see other things in life. कि अच्छा हाँ, I'm back. Get back to yourself. Because you're doing one thing constantly for 14 hours a day. You go mad. People can't develop their personalities because they're doing that thing for 3 years, 4 years, 6 years straight. Yeah. How would you grow as an actor? How would you grow as a person? So there's a lot which can be changed. Giving respect, giving money on time to a lot of actors who are struggling with not getting their money on time. I think this is the worst thing you can do to an artist because that person has bills to pay. Yeah. And ये मेरे साथ भी हुआ है. Like I literally had to call people कि give me my bloody money. And it's not कि मेरे पास पैसे या savings नहीं है. Dude, I have worked for it. Yes. I deserve that money. I'm not asking something कि मैं आपसे उधार नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने पैसे मांग रही हूँ. And when they give you that, अरे काम करने के टाइम पे they will come and they'll be like काम निकलवाने में number 1. आप phone payment के टाइम पे they'll not answer your calls. आज ऑफिस बंद है, आज ये है वो है, तो all this that turns you off. And it's not the medium, television या audience की गलती ही नहीं है. यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी गलती है. You got the money? Yeah. I make sure I get my money anyhow. But recently there is a news in the market that one of our Yes, very yes. good friend Krishna Mukherjee, who has done a super amazing job Absolutely. in Shubh Shagun, and she's not getting her payment till the date. Yeah, I read that. That was very. Imagine you going through it as a girl. Even forget as a girl, as a person you going. अरे कोई आदमी भी होता, Yes. उसको अगर कोई लॉक कर रहा है, हाँ. वो कोई इतना झूठ तो नहीं बोलेगा. नहीं, बिल्कुल भी मीडिया नहीं. में आके इतना बड़ा कोई झूठ नहीं हाँ. बोलेगा. He will not put his job on stake. Yes. क्योंकि और भी प्रोड्यूसर्स हैं जो ये न्यूज़ देख रहे होंगे.
So इतना बड़ा कोई झूठ नहीं बोलेगा. And I completely support her because it can happen in television. Yes. It can definitely happen because the production people don't know how to speak. The producers, touch wood, I have got very good producers to work with. But production people, pathetic. They don't even know how to speak to you. They don't even आपको तो चलो आप एक लीड का फेस बोल के थोड़ी इज्जत कमा लेते हो. जो बाकी के रोल्स कर रहे हैं ना, चाचा मामा भतीजा, उनको तो वो इज्जत भी नहीं मिलती. आई हैव सीन how people in my show who are doing other roles get treated, and it's for me Horrible. that's when I get scared of. I'm not doing any other role apart from a lead, and it's not. It puts a full stop to my creativity as well. अगर मैं कोई और रोल भी करना चाहूँ, मुझे पता है मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. अगर मैं अपने कंफर्ट के लिए किया, मुझे 10 दिन ही काम करना है, तो मैं 10 दिन के लिए कंटिन्यूटी ट्रैक उठा लेती हूँ. तो मुझे पता है वो इज्जत नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि वहाँ पे इनका एक छोटा दिमाग है कि एक लीड है और एक दूसरा लड़का लीड है, इन्हीं को इज्जत दो, इन्हीं को सारा वो दो, बाकी बुलशिट. हु आर यू गाइस? हाँ चलो चलो बैठो बैठो. नॉट इवन कंसिडर्ड. So who would like to work in a medium like that? That's why majority of television actors today are running to web and films. Because वहाँ पे उनकी इज्जत होती है, उनको कुछ करने के लिए एक स्कोप होता है कि they improve their acting, they improve their body language, they work with better people, better production, better outcome. Here is the same thing. And I love my audience because of television. I'm here. That's why I said I love the medium, but not the people working in it. I can relate to it because I want to tell you one thing. When I started TV, so I got a cameo character for the doctor. Doctor का character था, and I got the this thing कि next day आपको आना है, doctor का character है, कर लोगे. मैंने कहा ओके फाइन. अच्छा, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हो तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होता है कि आपको क्या करना है. You have to start from somewhere because you हाँ. So I got the साड़ी. एक तरफ से वो जली हुई थी और एक तरफ से उसका पूरा फॉल उधड़ा हुआ था. जब वो साड़ी पहनाने दीदी आई तो मैंने कहा मैम इसकी साड़ी, मतलब ये साड़ी फटी हुई है. तो क्या हो गया, अंदर जाने वाला है. मतलब अगर वो प्लीट्स आप बनाओगे तो वो अंदर जाने वाला है. हाँ. इसमें भी इन लोगों की गलती नहीं होती है. The production is the one who says करना पड़ेगा. हाँ. इसमें गलती मेकअप आर्टिस्ट की नहीं होगी. मेकअप मैं कितनी बार बट समटाइम्स भूमिका आई फेल्ट चाय ज़्यादा केतली गरम वाला हिसाब. ये तो है. हाँ. ये तो हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा है कि मोर देन द प्रोड्यूसर आई थिंक द प्रोडक्शन पीपल एंड ईपीज आर ऑन हीट. हाँ. एंड ऑन एडी जो रूम में बुलाने आता है. ओके मैडम हो गया तुम्हारा, 5 मिनट हो गया. सेट पे रेडी नहीं है कोई भाई. हाँ, बट ये पता है मैं पूरा सर्कल समझती हूँ. क्योंकि मैंने भी बहुत क्रिप किया है शुरू में कि यार ऐसे क्या, अभी क्यों आके बिठा दिया मुझे यहाँ पे. नाउ इट्स ऑलवेज ताली 2 हाथ से बजती है. इट्स ऑलवेज क्योंकि उसको वहाँ पे गाली पड़ रही होगी कि डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर्स में होता है कि आई वांट टू सी द एक्टर्स. यस ऑन सेट. यस on लेकर set. आओ. I want to see the actors because then I can visualize certain things and sometimes actors will like यार मैं एसी में बैठा हूँ, मेरा मेकअप ख़राब होगा, मुझे क्यों बुला रहे हो सेट पे जहाँ एसी भी नहीं है. और हमारे टेलीविजन के मेजॉरिटी सेट्स पर एसी ही नहीं होता है. और अगर आप एसी मांग लो तो आप टैंट्रम्स फेंक रहे हो. तो मतलब इंसान अगर एक बेसिक चीज़ मांग रहा है तो आप टैंट्रम कर रहे हो. अगर हमें पंखा चाहिए, हमें गर्मी लग रही है, आप एसी में रूम में नहीं जा सकते हो. अरे उसको तो रूम में ही भगा दिया, क्यों गया, क्यों ये. बहुत बवाल होते हैं इन सब स्टूपिड चीज़ों पे. सो आई डोंट इवन ब्लेम द एडीज. So many times I've hugged my ADs and I said it's okay, I know you're being bombarded. I'll come, I'll show my face and I'll directly speak to the source कि सर मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. हाँ. लाइट तो रेडी नहीं है, मैं जाऊँ क्या. So there's a way of handling. Yes. So I handle it that way. So I don't blame the makeup dadas and all these because I know where they're coming. They're doing. They are also working more than us and they're not even paid. Yeah. हम तो फिर भी as faces हम लोग अपने पेमेंट निकलवा देते हैं, उन बेचारों को तो वो भी नहीं मिल पाता. वो भी नहीं मिलता. And they're so frustrated with their lives already. तो काम पे भी आके ये खाना उनको ढंग से नहीं मिलता, पानी 10 बार मांगेंगे तो 1 बार बॉटल मिलेगी. उनके साथ ये सब होता है. तो मैं उन लोगों को तो मैं बोलती ही नहीं हूँ कि I know where you're coming from. That's working like we are working as. Yeah. Okay, so ये तो थी टीवी की बहुत सारी बातें जो कि सामने आनी बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने भी एक्सपीरियंस की हैं. बट या सो नाउअडेज इट्स लाइक इस प्यार को क्या नाम दूँ जो पहले चलता था. नाउ इट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप. सो एंड यू हैव बीन थ्रू दिस 7 years toxic relationship and after that you got a wonderful husband. Yeah. And what was matlab this entire journey, how you came out from this toxic relationship, because एक पार्टनर का पुश मिलना बहुत ज़रूरी होता है when you are on peak and when you are celebrating your success your own. So what was that in these 7 years
how you deal with this. I did not know, to be very honest, how did I deal with it, because at that time when you're new, you were ab ghar se bahar hote ho, and I was extremely like 20, 21 at that time, extremely young. तो for me it's like कि यार मेरे लिए सब कुछ नया था, रिलेशनशिप था, सीरियस रिलेशनशिप, घर वालों के पास नहीं जाना दिवाली विवाली कुछ भी, क्योंकि वाई आई एम इन अ रिलेशनशिप लिविंग इन विद माय गाय, एंड मतलब एक होता है ना दैट यू फोकस ऑन द रिलेशनशिप सो मच, You are investing your entire things in and it. I feel that those were the that was a learning point in my life, though I was at the top of my career at that time, but emotionally, relationship wise, I was at the lowest of my life, and the lowest what my friends have seen. They know what I've been through, they know what I have actually survived, and it is traumatic for any woman, because I don't like to talk about it, because for me it's like putting down another person who's not in my life anymore. I respect. Just let it be, yeah. So for me, I'm not someone who will ruin someone's image or ruin someone's life by going ahead and telling and giving out details. But since you've asked me this, I was at the lowest of my life. Because of the circumstances, it completely put me down. I lost my confidence as a person. I used to doubt whether even I'm pretty or not. Because when a person just can kill you with words, Yeah. is the worst thing that can happen to you, when the person you look up to is the only one who's telling you you're not worth it. What do you have in you? वो किसी की गलती नहीं, वो वक्त की गलती वो वक्त थी. की गलती है. कोई गलत इंसान नहीं होता है ज़िंदगी में, वक्त ख़राब होता है. I have been through all these situations in life, and then when I realized कि no यार, why am I focusing on relationships and love? I'm here to work. Let's just work. And when I focused on love, then I met my husband. So love comes to you when you least expect it. Yeah, actually. So yeah, after all these conversation, now the thing for, do you manifest? Yeah, I do. Absolutely do. I believe in it. You believe in it? Completely. Like whenever I wake up, I make sure that I wake up on a very good note and positively. मैंने किसी एक फ्रेंड से सीखा है, वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे मुझसे, आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 साल छोटी है वो. उस टाइम पे आई थिंक शी वाज 19 एंड शी टॉट मी दिस कि जितना आप अपने बारे में अच्छा बात करोगे ना, आपके साथ अच्छा होगा. Yes. The moment you keep saying अरे मुझे काम नहीं मिल रहा है, आई एम सो sick, I'm so dead, मुझ में एनर्जी नहीं, आप वैसे ही रहोगे. वैसे ही रहोगे, yes. The moment you say no, I'm fine, let's do it. I'm gonna have a good day. I will get this project. I am doing this project. होने से पहले ही बोलना शुरू कर दो. It will happen, but with a clean heart. You need to believe in whatever you are saying. So absolutely, I believe in it. Yeah. When you are doing hard work for this, you are auditioning, you are giving your best. So yes. Because manifestation is what? You're putting your energy into something. Yes. You're getting something to life. So the universe is listening to you. So better you give out good positive things which will come back to you. So I completely believe in manifestation. Lovely. Okay. So now talk about all the rumors about your lip surgery, Botox and this thing. Why? यार अभी at that time probably I was doing shows and all, तो news तो चाहिए होता है. And I think I had posted because a lot of girls, होता है ना कभी थोड़ा hate होता है and all that. ओहो लिप सर्जरी करा ली. Okay. कभी कभी ऐसा एंगल का खींच लिया तो your lips look bigger. हाँ. अगर कराई होती तो अभी मेरे होठ यहाँ होते. हाँ वो बोटॉक्स से पता चल जाता है जब कोई बोटॉक्स या लिप फिलर या कुछ कराता है. I've never done it. There are ways of shaping your bloody lips. People don't understand this concept. Because if I remove it right now, if I put a lip gloss, आपको मेरे lips इतने plump नहीं लगेंगे. But when I line it, I know what to do. What to do, yeah. It looks nice. And पतले नहीं है मेरे होठ. I have decent hoठ. Nice. So one day I just posted and मेरे को बहुत DMs आए थे. ओहो आपने भी lip surgery करा ली बाकियों की तरह. हम निम्की मैम आप तो ऐसे नहीं थे ये वो. And at that time I used to respond to every DM. तो मुझे आया मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि यार you respond every DM? Yeah, I still do. I still Oh, lovely. Like to Personally? Personally. Okay. So then I posted a story कि guys I have not done any lip filler. So It's my please natural one. कि यार इतना भी ट्रोलिंग मत करो. हाँ. कि यार इतना आप इंसान का चेहरा देख लो. मैं लाइव आती हूँ, आप मुझे देख के बोल ही सकते हो कि मैंने कहीं पे कुछ हुआ है अपने आप को कि नहीं. So I think that one of the media portal picked up because they follow the account and everything, and then they posted कि अरे, and the tagline was निम्की भूमिका गुरुंग्स लिप फिलर. तो लोग वो देख के प्ले करने लग गए कि अरे इसने लिप फिलर करा लिया. तो टैगलाइन भी तो ऐसे ही देते हैं ना कुछ मीडिया हाउसेस. तो
असलियत में कहीं नहीं कराया भाई मैंने कुछ, मैंने बस हेयर कलर कराया है, हेयर कटिंग कराया है, But it hair suits you. treatment Your कराया hair है। suits you. It's lovely. बस यही कराती हूँ. So I am someone who believes in home remedies, eating well. I'm not a person who believes in Botox, fillers, lip surgeries, nose surgery, hip surgery, any surgery, because I feel respect to everyone out there who believes, who wants to go ahead and look better, who want to go ahead and look prettier. All respect to you. That's your life. Nothing against you guys. But for me, I believe to stay natural. Yeah. मुझे ऐसा बनाए क्योंकि आज मैं एक लिप सर्जरी करके एक लिप फिलर डाल दूंगी, मुझे पता है 10 साल बाद वो सड़ के कैंसर बन जाएगा. Oh, हाँ. मुझे नहीं करना है वो. आई नो व्हाट आई एम डूइंग विद माई बॉडी. I was very reluctant on even going with the COVID vaccines, but we had to because that became a very important Yes, thing. important. Yes. Because traveling उस COVID सर्टिफिकेट के बिना ट्रैवलिंग भी नहीं करने दे रहे हाँ. थे. तो बट हाँ, तो अदरवाइज मैंने कुछ अपने लाइफ में अपनी बॉडी में नहीं किया है. Okay. Covishield or Covaxin? कोविशील्ड. Covishield. Guys, lot of things, lot of news is about this. Okay, so वैसे you already told us how's your married life, how's your in-laws. One song for your husband and one thing for your husband you want to say कि आज तक मैंने नहीं कहा. वैसे आपने कह दिया होगा क्योंकि आप एक्सप्रेसिव मुझे लग रही हैं. बहुत. है ना? I'm the Yes. most romantic girl you'll ever come across. So yeah, one thing which you want to say to your husband. I think I just want to say he knows I love him, but I just want to say thank you because in today's time to have a good partner, especially a man, is and in today's time एक अच्छी लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल है. Yes, मुझे पता yes. है. A lot of friends of mine are struggling to get a good girl. But I would only want to say thank अच्छा, you to my many of your husband. friends are struggling to get a good Oh girl. my God! It I'm just single. clicked me. So you're single? Yes. Okay, I know what to do next now. Yes. So yeah, so just want to say thank you to my husband because unknowingly he's pulled me out of something and made me a different person. Yeah. And वो थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू वही डिज़र्व करते हैं आज के टाइम में बिकॉज उनको नहीं पता था कि वो मुझे कितना हील कर रहे हैं. Yes. तो आई थिंक आई स्टिल से थैंक यू टू मैन. ही नोज आई लव हिम द मोस्ट. ही नोज इट एंड आई एम टेलिंग यू उतना ही प्यार वो मुझसे करते हैं. इट्स अ वेरी वी डोंट पोस्ट थिंग्स फॉर द मीडिया. वी डोंट डू थिंग्स की दिखाने के लिए कि वी आर द नेक्स्ट कपल. वी डोंट डू दैट. Till date, I have never gone on his Instagram, posted any of my picture on his behalf. Never in my life. His phone, his Instagram is full of my pictures. More than me having his pictures, his account is full of my pictures. It's because it's a very small thing, but it shows Yes, the love. the love, He the shows care, me yes. off. Like, I love her. She's mine. You are mine. Yes. बस. तो यार ये काफ़ी लड़की के लिए एक्सेप्टेंस, प्यार, लॉयल्टी यही काफ़ी होता है. Money and all don't matter to me. No. Never It's mattered. all secondary. All when you have your partner, your supporter with you, you'll win the world. A right partner, be it a woman or a man, is very important in life to succeed, to have a peaceful life, which I feel, and I think congratulations to everyone out there who've got a lovely partner. आज के टाइम में बहुत difficult है भाई. अगर आपको एक अच्छा partner मिल जाए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. Yes. जो मोटिवेशन आपको मिलता है, जो कॉन्फिडेंस I आपको, जो know. प्यार, जो एश्योरेंस मिलता है, उससे आप दुनिया बदल सकते वही ना, that tagline I have already given to the camera. You'll win the world. You win the world, yes. Just a push. You are celebrating your success alone, but with someone who are supporting you. That Next is level. totally Next level. Next level. अरे only a good girl can understand this thing. Please. हैं. I know I have a lot of good guys. Keep me who in are mind. single, don't worry. No, I'm not kidding. Oh, ख्याली पुलाव. Alright everyone, so यहाँ तक की कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग रही है क्योंकि हमारी भूमिका बहुत रियल है. जैसा कि मैंने इस चैट को नाम दिया है भूमिकाज पॉप टॉक्स. सो आई नो बहुत सारी टॉक्स आपके सामने पॉप होने वाली हैं अब क्योंकि इट विल पॉप योर माइंड एज वेल. चलिए लेके चलते हैं सेकंड सेगमेंट में जहाँ भूमिका जीतेंगी ये हैम्पर. I'm winning it. इनमें से बहुत सारी चीज़ उसे पसंद भी आ गई है. चलो आई एम ग्लैड. सोन पापड़ी. सोन पापड़ी. सोन पापड़ी फैन. Okay. All right, everyone. So this is rapid fire round with Bhumika. You like rapid fire? I love rapid fire rounds. मसाला भी चाहिए हाँ तभी मसाला मिलेगा.
I would like the Son Papdi first. वो ऐसे ही ले जाना, तुम बहुत स्वीट हो यार. Okay, when you started dating, Who? the very first relationship, when The very first. age. Age? 21? What? 20. 20. Were you ready for a relationship or what? अरे पर पता ही नहीं था ना हो गया. कि आई वॉज वर्किंग हाँ. एंड यार मैं उसे रिलेशनशिप बोलूंगी. अब मुझे नहीं पता वो बंदा relationship या ही जो है भी था यार. मेरे लिए ठीक तो है. आई वॉज वेरी यंग हाँ. एंड इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी बिकॉज वी वर वर्क लाइक यूज टू वर्क टुगेदर एंड एवरीथिंग. और वो खाली बहुत इनोसेंट वाला प्यार था, लाइक मॉल तक जाना एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं. एंड मे बी आई वॉज टू मच ऑफ अ kiddish girl for that guy, तो he broke up with me and he dumped me. So मैं बहुत छोटी थी यार. For me it's like किस करना भी शादी से पहले पाप है. मेरे वो था, वो एज में थी मैं. So I used to not. So when I kissed a guy, मैंने आके बड़ी ताऊ जी की बेटी को बताया मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी. Oh God, this question, ये हर लड़की की लाइफ में एक एज में क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने किस किया, मैं कहीं प्रेग्नेंट नहीं हो जाऊंगी. So yeah, my first guy broke up with me because I didn't do anything. You were not a great kisser or what? Why I didn't do you broke anything. up? Okay. That is why. Okay. So do you like politics? You know politics. कौन आएगा इस बार? BJP और कांग्रेस और शिवसेना, whatever the thing is. Do you like politics? Bhai, you cannot say कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, but to be very honest, in today's time, there are a lot of things that our economy is suffering with, which are not being highlighted. But at the same time, there are so many good things which has happened. Yes, which is happening. So as a voter, you get really confused कि किसको भरोसा करे किसको कि ना नहीं. करे. और ये तो मेरी शुरू से ही रही है कच्ची. problem. हाँ. But looking at the way BJP is going ahead, they're pretty much connected to today's Scenario, generation. Yeah. the audience, and in a way India is a lot more stronger in the economic phase, and in a lot of way India has emerged as one of the biggest economies in today's Yes. time. So I think we are doing tremendously Growing. We are a growing. great India job, is growing. Yeah. and I think I would go ahead and I would vote for BJP. BJP. Yeah. BJP. Have you seen that this interview of Tiger Shroff where he farted? यार I think He jumped बेचारों को out, he farted and he sat back. यार I feel very bad for such actors, but यार वो भी तो इंसान है, आती होगी फाट यार. तो क्या You हो did गया? somewhere on your sets? Because you are सबके foodie. सामने तो नहीं किया होगा यार, of हाँ, course. तो अपनी वैनिटी में जाके किया होगा. यार अभी ये डिटेल मुझे याद नहीं है. I'll have to see. But Everyone किया है farts ना? यार. Everyone has farted, yeah. Everyone farts. It's fine. But I don't remember exactly मैंने ऐसा वाला like वो वाला कब fart किया होगा. I'm sure everyone farts. Come on, if everyone says I don't fart, it's a lie. No, yeah, it's you a lie. all fart in the bathrooms, in your bedrooms when you're all alone. You even fart when someone moves away from you. So everyone farts, and then they all walk off. कि किसने fart किया? So it's happened with me so many times, in the club or somewhere where it's too crowded, or in the sets as well. कि अचानक से there will be between the scene there will be a bad smell. Yeah. और सब एक दूसरे को टेक में ना देख रहे हैं. और जिसने यहाँ वहाँ मुंह फेरा हुआ है भाई वो ही बंदा है. जो सबसे दूर उठ के गया ना ग्रुप से उसी ने किया. उसी ने किया. So the best experience in your acting career till the date, I guess Nimki. After Nimki, it was Hara Sindoor Hara for Sindoor. Atrangi channel. I think I had the best team, the best co-actors, the best experience, the best director, best producer. It was crazy. And that show was a finite show. It was only on. We shot only like 3-4 months. और मेरा दिल बहुत टूटा था कि जब वो शो बंद हुआ था कि क्यों. The worst rejection. So many. I'm still getting कौन rejected. ताश के बोलता है भाई? So many. I'm fine. यार रिजेक्शन ही आएगा ना तो आपके अंदर आप लेट बैक हो जाते हो. कि अच्छा I'll तो crack it. I know. Next time ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. I think rejection is very important in life, and let me give you a fact. It's an insider. I'm sure when this goes viral, it will be another this thing. It's been 1.5 years that I've not done a daily soap, like a regular daily soap.
फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ कुछ तो ऑफ कोर्स शोज़ के लिए मैंने ही मना किया बिकॉज दे वर आउट ऑफ मुंबई एंड एवरीथिंग एंड आई कांट रीलोकेट एंड आई डोंट वांट टू रीलोकेट. I saw the other day I was sitting and I was seeing how many auditions I've sent. I counted, there were almost 48 auditions I have sent and I have not been selected in any of them with no reason at all. Sometimes it's the budget, sometimes it's अरे आप बड़े लग रहे हो, sometimes अरे आप तो बड़े से छोटे लग रहे हो, फिर कभी मोटे लग रहे हो, फिर कभी आप बहुत पतले हो रहे हो, फिर अरे वो चैनल को कोई और पसंद आ गई, अरे आप तो whatever reason. No one ever came back to me and said, you did not perform well. You come and give me that feedback, na? The worst thing about television is that they don't give a feedback. Yeah, they don't. Because they don't focus on acting. Yes. वो acting देखते ही नहीं है. वो देखते हैं अच्छा बजट में फिट हो रही है. Sometimes the people replied us के चैनल ने मना किया है, ऐसा होता है? They have to put everything on channel because उनके पास जवाब नहीं होता. Of course, the last call is of course the So channel. I asked somebody कि चैनल ने क्या मना किया मेरे लिए? Because I was new, I started my auditioning that time. चैनल कभी रीजन नहीं देता है. Yeah. They said. तो ऐसा नहीं रीज़न नहीं देता है. They all have reasons inside, but channel definitely has the biggest say. और अपने favorites होते हैं. अपने खुद की एक पसंद होती है कि नहीं मुझे यही लड़की चाहिए इस रोल के लिए. तो बहुत सारे reasons होते हैं. बहुत सारे. Okay. What about Tinder and Bumble? Never. I never believed in all these apps because आप ऐसे ऐप पे क्या करोगे मिलके लोगों को? You'll just get physical. How would you make a connection? On those apps, people are only there to do that. How can you find love on such apps? And such apps की जो ये ads बनते हैं ना उनको चमाट डालने का मन Nowadays, रहता है. everyone is finding their love on Tinder and Bumble only. That's not love. No, That the is- partner. तो वो उनके डिवोर्स भी हो रहे होंगे 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद. ये नई खबर है. So, do you feel the female friends are also the bitchy मतलब Most of the times, women don't support women. है ना? Completely. मेरे गिने चुने शायद 3 गर्लफ्रेंड्स बची हैं अब बिकॉज बची हैं वो बचते ही उतने हैं. हाँ. क्योंकि आई थिंक women have a problem with their own genders. Yeah. When it comes to talking about women empowerment and everything, I think women need to change themselves first. आप Yes. खुद ही अपने fellow पर्सन या फ्रेंड को ही सपोर्ट नहीं करते हो, हाँ. तो आप सपोर्ट किसी और जेंडर से कैसे मांग सकते हो? When you yourself look down on another woman, ruin their houses, bitch about them, spread rumors about them. So how would you empower each other? I don't understand the concept because I have not seen women being happy for another, like a woman being happy for another woman. हाँ. They always have some jealousy, some insecurity, and I really wish someday it changes. And that's one of the reasons probably I'm lucky to have 2 girlfriends in my life, and 3 they are actually. real. They are real. Yeah. I like, you know, everyone might be knowing Indra, Steffi and मेरे 3 Jasmine. ये 3 जो मेरी girlfriends हैं, they're so content and confident within themselves that they don't need to go ahead and look at another girl and get demotivated. They push me for better things, though they're not even in the industry. So for them it's like They are not from the industry, na. That's why. Yeah. That's exactly why. Yes, And yes. everyone who knows me, I don't have industry friends. I've never made industry friends. 2-3 जो भी हैं बहुत अच्छे हैं लोग हैं इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग मेरे दोस्त हैं. Yes, yes. तो मेरे पास भी बहुत अच्छे लोग हैं. मैंने भले ही इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया हो, लेकिन अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं. As you are. With time and age. Yes, yes. तो ये रैपिड फायर राउंड था, लेकिन 2-3 और क्वेश्चन बचे हैं. तो आइए जानते हैं जल्दी से अबाउट मेट गाला लुक्स. किसका पसंद आया, किसका नहीं पसंद आया? I think Alia Bhatt rocked it. Oh yeah, she killed it. Killed it. And I really like Kendall's. Kendall's look was nice because I love her. I think I find her the prettiest. Prettiest one. Kendall. ये बिकॉज फैशन आइकन भी है ये. मतलब अपने आप को फैशनेबल रखना, इट्स अ टोटली डिफरेंट भूमिका, लेकिन रियल भूमिका तो आप जान ही चुके हैं उनकी बातों से. बस यार अच्छा, कोई भी ऐसा मेकअप जिसके बिना आप बाहर नहीं जाना चाहेंगी? नहीं जा सकती. मेकअप नहीं है. अब अभी भी आप अगर देख ऐसा कोई सकते हो प्रोडक्ट? हाँ. तो still in my bag, I'll show you. So I don't use base at all when I go out. शूट पे तो होता ही है. So there is a sunscreen which is a little tinted. हल्का टिंट होता है उसमें. अपने मॉइस्चराइज़र एंड सब के बाद मैं वो खाली एक हल्का सा वो लगाती हूँ और उसके ऊपर हल्का सा मेरा एक कोई भी कॉम्पैक्ट वो फेवरेट वन
मैक हो गया, बॉबी हाँ, ब्राउन या हाँ. कोई भी, हल्का डैब एंड आई एम डन, Ah. बिकॉज टचवुड You are blessed with very good skin. I have a good skin, हाँ. all because of my parents. हाँ. सो मेरे लिए वो इनफ होता है, यही लिपस्टिक को मैं यहाँ लगाती हूँ और इसको ही मैं कभी कभार यहाँ भी लगा लेती हूँ, और बस काजल को वही स्मच करके वही लिपस्टिक को नीचे भी लगा लेती हूँ, इफ यू सी. ऐसा ही देखा था This क्या is- शेखर ने? हाँ, शेखर has seen me in the simpler, in हाँ. a simpler form. हाँ. ये तो मैं अभी because I'm out, I'm in front of What's camera. the story behind when your relationship started? बहुत ही फिल्मी है यार. हाँ. मतलब कोई लोगों को बताती हूँ, लोगों को स्क्रिप्टेड है. हाँ. मतलब it was like we knew each other from almost 10 to 11 years, but never said hi also to each other, because I used to go out to lounging, dining, partying and stuff, and he used to be the person of contact, point of contact. So कभी बात नहीं किया. He was busy in his own world and everything, and I used to hate him in a way, because he was like हर एक लड़की का क्रश शेखर था at that time. Okay. And I don't like Such people. such guys who are जो already in. सबके हों वो मेरे नहीं हो सकते. मुझे सार्वजनिक लोग नहीं पसंद है. तो for me I never got attracted, and I never got attracted to looks or money. For me I always was a relationship girl. आपने मुझे पूछा इतनी जल्दी relationship कैसे? At that age I got into a relationship. That guy broke up with me in 6 months because I did not do anything with him. तो उसके बाद after 2 years I got into a relationship which went on For 7 years? आराम से, नहीं, for आराम से 2 साल. Bro, I तो dated only one. Why? Only one. I don't know. तो ठीक है, then I'm तो then very you bad need, you in need this. to meet people then. Yeah. So यार ऐसा नहीं है कि I dated a lot. I dated only I think 3 people in my life, and the third one I'm married to. So जो हाँ जो second one was 7-year-old, 7 पूरा वो सब, तो मेरा हमेशा long term relation रहा है. And now is my husband who I've married, and I think तो हम जब मिले was very difficult because I never used to like him, क्योंकि लड़कियों के साथ, and वो थोड़े से हर एक एज में you know होता है, मनचले होते हैं लड़के and all that, तो मेरे लिए मनचले. तो it was a big no. हाँ. Not my kind of a guy. Then I broke up with my 7-year-old relation, and उनका भी अपना एक कुछ चल रहा था, and he broke up, and अचानक से randomly he opens a new place, I get an invite, and I'm like, okay, it's my friend's birthday, I need a table. I book it, and that's when I spoke to him. And when I spoke to him and I saw a different Shekhar, who's been through so much in life now, from his teenage to the guy he was, that's what clicked to me. And I was like, detailing में तो बहुत है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, but I'm आपको छोटा छोटा बता रही हूँ. And that's when we started speaking, and then he asked me out, and that's how it happened. Oh, lovely. Super beautiful conversation, I must say. And we had fun shooting together, isn't it? I have. All right, guys. So, ये बहुत खूबसूरत सा सोन पापड़ी. Oh my God, it's Son too papdi heavy. hamper. It's very heavy. Okay, so this hamper is for Bhumika. I get It's my heavy, it's son heavy. papdi. Okay, so Thank you, there is guys. baklava, Thank you. rasgulla, and mixed bites because you Bika love ji is dry fruits. everyone's favorite brand, bhai. And there is a cup of Rashvit Ruch. Oh, so nice. please have your coffee or whatever you want to have because you are not a coffee and tea person. So yeah, this is for you. Thank you. Before saying bye, can we have a selfie together? Yes, absolutely. All right, so let's create some memories for the lifetime. Hi guys, so it was amazing shooting with Bhumika, and she is real. Why I can tell you this, because somewhere I can relate to her. बहुत सारी बातें जो मैं उनके साथ relate कर पाई. It was a mirror image in between us, क्योंकि yes, there was something. So yeah, lots of love to you all who all are subscribing my channel. But please tell to your friends, your relatives, just go on YouTube and please subscribe my channel. This is Rashvit Ruch, because we guys are doing a lot of hard work and we need your support, we need your love. Mwah! Lots of love from Ruch, and stay tuned.